Or what is a revision strategy? Other than writing in the margins, you should go for mental revision. After class, when you walk, just think what all has been discussed in the class. So pura you can't read, you don't have time to read again. So go for mental revision. Think what you have studied, what you have understood, what were the key points. ऐसे mental revision करते जाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा आप पेजेस पलट नहीं पाएंगे, इतने रजिस्टर हो जाएंगे. ठीक है, सिर्फ दिमाग का ही सहारा है. ओके, तो सब माइंड में होना चाहिए, मेंटल रिवीजन करना है. ठीक है, तो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट. फाइन. So we should be very clear with each and every term. Fine. Why Western word is used? Why not Eastern? Political. What comes under political? How should I define political? And thought. Why thought word? How thought is different from theory, ideology, philosophy. So the only way to understand things is by asking questions. Wherever you see, you should have a question. What Western means? Is there any non-Western? What distinguishes political thought from economic thought? What is thought? Why thought word is used? Why not ideology? Have you understood this? So we'll first see these particular terms. So first term that we will see is political. Fine. We will not go much in Western. We will start comparing Western when we will do Indian thinkers, so that we can compare Eastern and Western. So right now Western means we will start with the Western philosophers. Western philosophers means from ancient Greece. Fine. So different stages in Western philosophy, from Greece, then modern philosophy is starting with Machiavelli in Italy, then we will move to British philosophy, French philosophy, and later on American and other continental philosophy. Fine. So Western for the time being need not to be defined. Once we will do Indian, we will understand the differences. So our very first question is, what is political? What all will come under the political thought? ठीक है. How will you distinguish political thought from economic thought? So first challenge for us is defining political. What is politics? After this lecture, when you go home, you should be in a position to speak on this thing. What is politics and how will you communicate politics to someone? You understand what is politics? What is politics? Are you interested in politics? You are interested in politics. But you know you are interested in what? You are interested in politics, but what is politics? क्या है politics? No, I am not asking political science as a subject. Politics is a study of power. When you speak such statements, you know it and you speak, but you need to understand and speak. You have to not just repeat whatever you have read or heard, but it should always come straight from your heart and mind. What do you understand by politics? Is there some politics between Delhi government and union government? Is there some politics between China and India? What is politics?
how we function with each other. You do politics in all, how you function with your friends. Okay. So politics is limited to the government. You don't do politics with your friends. You do politics with your friends. करते हो ना? थोड़ा बहुत क्यों? रोका किसने? ज्यादा? हाँ, थोड़ा बहुत क्यों करते हैं? Is politics a bad thing? Then why do you do थोड़ा बहुत? Why don't you do lot of politics with your friends? I don't want any bookish knowledge about what is politics. You must have experience. You are interested in politics. तो जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट है उसके ही बारे में आप 2 लाइन नहीं बता सकते. तो जिसमें इंटरेस्ट नहीं है उसके बारे में तो क्या ही हालत होगी. इसीलिए यूपीएससी ने एक कॉलम बनाया है हॉबी, कि भाई लोग कुछ नहीं बताते, कम से कम हॉबी, अपनी हॉबी के बारे में बता दें. ठीक है. तो व्हाट इज पॉलिटिक्स का बी ओरिजिनल थिंकर. एनी एग्जांपल ऑफ पॉलिटिक्स? व्हाट पॉलिटिक्स चाइना डिड एट ब्रिक्स? कुछ पॉलिटिक्स की? पॉलिटिशियन थे वो लोग. क्या पॉलिटिक्स कर दी चाइना ने? पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपेंशन. और चाइना ट्रैप्ड इंडिया और इंडिया ट्रैप्ड चाइना? चाइना ट्रैप्ड. सो we lost the political battle in a way. So we are not good at politics. We are not good at international politics. Fine, we may be good at politics in domestic. So Amit Shah is better politician or Kejriwal? Amit Shah is a better politician, right? So what politics they have done? They have reduced the chief minister to a level even weaker than a mayor or a official or secretary. Even the chief minister does not have a power which a secretary has. It is better to be a cabinet secretary or a principal secretary in Delhi rather than the chief minister of Delhi. इससे अच्छा है कि एग्जाम पास कर लो बजाय इतना बड़ा इलेक्शन करो, इतने खर्चे करो. क्या है पॉलिटिक्स? व्हाट इज पॉलिटिक्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ? इट अफेक्ट्स यू एंड यू गेट नेचुरली inclined towards politics because it matters to you. Fine. It affects because this state decision making affects our day-to-day life. It matters what taxes government is imposing. It matters what services government is giving to us. Fine. So what is politics? It is such a simple thing. Taking care of our one's interest is politics. Then what is business? And what is the difference in politics and business? Politics is business. No, politics and business is same. Daily human's opinion. Human's opinion is not politics. Yeah, good. So what I want, think originally. Thinkers are not more smart than us. We are smarter. We can think much better than what they have thought. Fine. So the idea is you will write good answer only when you will speak from your heart. And you can speak from your heart when you understand your heart. Fine. So when you understand, how do you understand your heart? What helps you? Observation. अपना तुम क्या वो हो, डॉक्टर हो जो कार्डियोग्राम में देख रहे हो? हाउ डू यू ऑब्जर्व द हार्ट? इंट्रोस्पेक्शन. ठीक है. हार्ट को तो लॉजिक से समझ सकते हैं, तो द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक. एनीवे, try to keep on experimenting and defining what is politics. Some people said that's fine. So politics is about protecting the interest
politics or diplomacy is art of possible. There are different ways you can understand. So anyway, I will start now. So in politics you see power. In politics do you see ethics? No. Politics is closer to ethics or business? Business. So profit in business and power in politics are very interlinked things. Fine. And now let me start defining politics academically so that you are comfortable. Mostly when we define something academically, we go for etymological origin of the term. ठीक है? Don't write anything. Etymological means origin of the term, from where this term has originated. Okay, so you know that this term politics has originated from the Greek word polis. And what is polis? The Greek word for state. And which type of state were there? City state. So we will forget city state, we will use it in a more general sense, that the term politics means state. So what is political science? What you study in political science? Everything that is related to the state. Fine. So if someone asks what is the definition of political science, you can give one simple definition, that political science begins and ends with the state. Fine. So it is primarily the study of state. So what comes under the state? Does economic policy come? Social policies come? So in fact everything comes under the state, and because you study everything, that makes political science a master science. Fine. So political science is the study of state, or the term politics relate to all those activities which are concerned with the state. So all those activities that concern with the state, we broadly say governance. Fine. So what do you study in political science? Governance. The theories of governance, the ideas of governance. What is the aim of governance? Which state is an ideal state? Have you understood this? So the study of politics is primarily about state. And what does a state has? Power. So politics is what? Is study of power. Which power? Power of government over the people, or it is a power of men over women, power of upper caste over Dalit, a power of majority over minority. Do we study other powers also, or just state? Other powers. Because in modern times, if we take very institutional view, politics as the study of a state, we will ignore various ways in which power is being exercised. So from the study of a state as an institution or an organization, now we focus on a study of politics as a phenomena of power, how power is being exercised. So power is the central concept in politics. So politics can also be defined as the study of shaping and sharing of power. Okay. So now let us understand. In your copies you write defining political. Right. In order to understand
the term political we have to look at its etymological origins. Etymology, you understand? Origin of the word. Etymological origins. So, write. ऐसे arrow करके you can write. Etymological origins, right? The term politics comes from the Greek word polis, which meant city state or state. ठीक है, आपको राइट. Hence, politics denoted all those activities which came under the state. ठीक है, so anything dealing with a state used to come in the sphere of politics. Now every term develops, every activity develops, so we should also know how politics was understood in ancient Greek time and how do we understand at present. ठीक है, तो what is politics? If something is asked to define, preferably go into its etymological origin, then look into the evolution of the term, whether the way we define politics, is it similar if the way it was defined earlier. So how this particular term has evolved. So basically politics is what related to state. So we have to see what is the scope of the activities of the state. Fine. So normally the traditional view is like human life, our life. We have two spheres. One is our personal matters and one is our common or public matters. So human life can be categorized into personal sphere and public sphere. Public sphere is your collective sphere. When you come in contact with other humans, and personal is, what is personal? Which deals only with you is personal. Is family, whether family, where will you put family? Personal or public? Family is personal. Fine. So let us say, let's talk about two individuals, husband and wife, making a family. So there is no politics in family. There is a politics in family also. So should we negate personal sphere from study of politics? No. Fine. So earlier
The earlier scholars, when they talked about politics or they studied about politics, they confined themselves only to the public sphere. But there is no fundamental, or there is no dividing line or wall of separation between personal and public. Fine. So whatever is personal is also public now. Fine. So whatever matters to family, there was a time when state was nothing, not intervening in family matters, but presently that is not the case. Fine. So now family laws, personal laws, they also come within the periphery of the state. It means the wall between the personal and political, which was once there, is not present. It means the scope of politics and what is to be studied in political science, it has increased. पहले सोशियोलॉजी में फैमिली पढ़ते थे, लेकिन अभी पॉलिटिक्स में भी वी आर स्टडीइंग फैमिली. इज दिस पॉइंट क्लियर? फाइन. तो व्हाट इज द लास्ट लाइन यू रोट? अंडर द स्टेट. अंडरलाइन करो, एक्टिविटीज कमिंग अंडर द स्टेट. व्हाट टर्म यू कैन गिव फॉर इट? गवर्नेंस. Activities coming under the state, we call it as governance. अब लिखो, right? Hence, scholars like Garner, described political science as a study of state, as a study of state. अब लिखते हैं उनके वर्ड्स में. In the words of Garner, political science begins and ends with the state. Begins and ends with the state. What is the subject matter of political science in one word? Study of state. So political science begins and ends with the state. Some people focus on the functions of the state. I told you function of state is governance. So some people defined political science as the study of state and government. It is up to you want to remember the statement or not, but Garner's statement can be used at different places. So I am giving you one more view, right? Similarly, Gettel, another scholar, Gettel, described political science as the study of state and government. Now write what comes under state. Or government.
ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव टू टेक अ इवोल्यूशनरी व्यू. ठीक है, राइट, right, we require a evolutionary view with respect to the scope of activities, the scope of activities which come under the state. एक स्कोप ऑफ एक्टिविटीज विच कम अंडर द स्टेट. स्टेट में क्या क्या चीजें आती हैं, हमारे सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो वी हैव टू टेक अ इवोल्यूशनरी व्यू. तो फर्स्ट यू राइट कन्वेंशनल व्यू और ट्रेडिशनल व्यू. Conventional or traditional view. So traditional view is primarily associated with Aristotle. This conventional view starts with Aristotle. So why we start with Aristotle? Right, conventional view starts with Aristotle. Why we start with Aristotle? Right, because he is known as father of political science. Okay, so you start with the father and how originator has started. So he starts with, we start studying with the father of political science and how he defined political science. Fine. So what Aristotle does, Aristotle makes a separation between the personal sphere and public sphere. So in Western thought, we will see Plato, and Plato has brought family under the state. In Plato's book, you will find that state controls family, state controls marriage, state decide who will marry whom. So family was brought under the state. And Aristotle is known as the greatest disciple of Plato as well as the greatest critic of Plato. So one of the reason Aristotle has criticized Plato is Plato had brought family matters under the sphere of state. So what Aristotle does? Aristotle makes a separation between the personal and political, and he says that family does not come under the state. And who comes under the family? So in his family comes the master. Who is master? Men is the master, then the wife, then the children and slaves. So he does not give representation to women in public sphere. He even does not regard women as citizens. Okay. So because of Aristotle, in Western philosophy, we see that women are out of political philosophy. ठीक है, तो Western tradition has two traditions. One is called classical tradition and the other is contemporary tradition. Contemporary tradition starts after Second World War.
So classical tradition from Plato till Marx, or the philosophers in modern times, you can say Lenin and all, or primarily Plato to Marx. Now in classical tradition, women are absent. Okay, so the classical tradition of political philosophy is called as a masculinist tradition, and from 50s onwards, feminist perspective also started coming into picture. And so feminists, one famous slogan of feminist is personal is political, means they have ended this belief that there is no politics in family, or family should be kept out of the purview of state, and they insisted that state has to talk about family, state has to talk about the status of women in family. So now we take a more extended view of the activities that come under the state. So if you study from classical point of view, state will cover personal sphere? No. But if you study from contemporary point of view, state will cover personal sphere. Fine. So in India, one major debate is ongoing. Today itself, I think there is in Hindu an article by Faizan Mustafa on UCC. So the idea is, should Indian state be intervening in the family to change the family laws or not? So you know why this problem comes in India? Why this problem does not come in US or West? Because we are yet not a fully modern societies. We are still traditional societies. So tradition and modernity coexist. So these questions are not clearly defined. Fine. So India aimed to become modern society. We aimed to have uniform civil code, but we realized that India is yet not modern. People will yet not understand why state should interfere in family. So we kept uniform civil code outside the sphere of the state, and in the constitution we kept it under directive principles and not under the binding arrangement. Fine. So in modern times, the crux of the matter is, the if you define politics traditionally, you go for separation. But if you explain from contemporary point of view, you reject the view of separation, and it is based on the belief that personal is political. So a evolutionary view was needed. आज के टाइम में कोई एरिस्टोटल की डेफिनेशन बताएगा तो विल इट बी एडिक्वेट? नो. तो हमको क्या लेना है? इवोल्यूशनरी व्यू. हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो द कन्वेंशनल व्यू स्टार्ट्स विद एरिस्टोटल. व्हाई एरिस्टोटल मैटर्स? Because he is treated as father of political science. And what he did, Aristotle made a separation between personal and political. So for Aristotle, family matters will not come under the state. But now that is not the way we define. आ गया आपको समझ में? तो अब हम लिखते हैं Aristotle and what he did. ठीक है? तो राइट Aristotle as a father of political science made separation between personal and political.
ठीक है, बाय विच ही केप्ट पर्सनल स्फीयर out of the purview of PURVIEW, purview of the state. ठीक है. Now why he kept etc. you can just write. It is to be noted that Plato, who is regarded as father of political philosophy, and also the teacher of Aristotle, keeps family, marriage, and other personal matters under the sphere of state. Sphere of state. Is Plato's view matching to the contemporary view? ठीक है, Plato kept all these things under the state. Now write Aristotle who is not only regarded as the greatest disciple of Plato, comma, but also the greatest critic of Plato. Comma, has been extremely critical of the way Plato has defined political. What comes in Plato's political sphere? Personal also comes. तो इसको लेकर के he is very very critical. Fine, right? Hence Aristotle very categorically मतलब very clearly, very categorically separated personal and political. ठीक है, तो लोगों ने फादर किसको माना, प्लेटो को कि एरिस्टोटल? इंपॉर्टेंस किसको ज्यादा दी, एरिस्टोटल का, तो उसी को ट्रेडिशन को फॉलो किया गया. ठीक है, तो अब इसमें लिखते हैं राइट एरिस्टोटल्स इन्फ्लुएंस, एरिस्टोटल्स इन्फ्लुएंस remained intact among the philosophers of classical tradition. ठीक है, क्लासिकल ट्रेडिशन कब तक है,
टिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या एज अ थिंकर हम कहेंगे टिल मार्क्स, ठीक है, क्लासिकल ट्रेडिशन कॉमा टिल कार्ल मार्क्स, ठीक है, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ, हेंस among all disciplines political science in general and the classical tradition in particular is considered as the most masculinist discipline, most masculinist discipline. अंडरलाइन करो, मोस्ट मैस्कुलिनिस्ट डिसिप्लिन, लिखो राइट, वाई इट इज सेट सो, वाई, right, because in entire classical political philosophy with the exception of Plato and J.S. Mill, John Stuart Mill, comma, we do not find philosophers writing from perspective of women ठीक है, तो नथिंग इज बीइंग इवैल्यूएटेड फ्रॉम वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू. Let us say if I talk about tradition of triple talaq, so it has been continuing, but whether that was rationally evaluated from women point of view, no, fine. So neither state nor governance nor public policy were evaluated from women point of view, so women perspective has been missing. तो डिसिप्लिन में वुमेन पर्सपेक्टिव था ही नहीं. तो देर इज वन स्कॉलर विच वी विल स्टडी इन फेमिनिज्म दैट शी सेज दैट वेयर आर द वुमेन, लाइक वुमेन आर इनविजिबल इन पॉलिटिकल साइंस, वुमेन पर्सपेक्टिव नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन इज मिसिंग? तो व्हेन यू स्टडी पॉलिटिकल साइंस एंड द क्लासिकल थियरीज, they will only be discussing man by nature is political animal. Always the term man will be used. Fine. So woman is taken for granted and the language of the subject is also masculinist. Theories are written from the perspective of men. Have you understood this? और इसका इम्पैक्ट क्या हो गया? इम्पैक्ट हैपेंस दैट पीपुल फेल्ट दैट पॉलिटिक्स इज द स्फीयर वेयर वुमेन और वुमेन शुड नॉट बी देयर, और इट इज नॉट अ मैटर दैट इज बिलोंगिंग टू वुमेन. तो व्हाट हैपेंड इज वुमेन बिकेम इनविजिबल फ्रॉम द पॉलिटिकल स्फीयर. Even if you talk about the heads of the states and head of the governments, hardly you will find
women being the heads of the state or governments in comparison to the men, means the percentage of women in politics is very, very limited. Now, what happens? Women absent from politics, and what politics does? It deals with decision making. It means the absence of women perspective in public policies and laws. We had a tradition of laws related to rape, custody of children, and many other things, and most of the laws were not favorable to women. Why? Because women were absent. Have you understood this? So, absence of women in philosophy is directly linked to the marginalization of women in society. So, how feminism has emerged? Feminism has emerged to address this marginalization. And when we addressed women marginalization, we have also realized that only women are not marginalized. Even the transgender community is also marginalized. At least women is present in public sphere. Transgenders are not even visible. The laws were such that it was not possible even to reveal the identity. So they are also missing. When they are missing from decision making, then the laws will be reflecting their perspective. No. So we had laws like section 377 and these type of things. So what happens if someone goes out of philosophy? Then that thing also goes out of policy, and this results into marginalization. If you talk about West, if you talk about India, you can add one more layer, and that is the layer of caste. Fine. So members of Dalit community were excluded. So their perspective has been missing. So now you need to bring these perspectives also. Have you understood this? So अभी हम West की बात करेंगे तो we will not talk about caste and other things, but when we talk about India we have to talk about these things. ठीक है. बट पहले जैसे अभी बिल्कुल रिसेंटली ट्रांसजेंडर्स एंड एलजीबीटी ये सब मूवमेंट अभी लाइमलाइट में आ गए, लेकिन टिल 90s women movements were in the limelight. So political science was being redefined in light of the women perspectives that was there. Fine. So what was the last line you wrote? Missing. तो अब लिखो what was the impact. Right. Absence in philosophy means absence in public policy. Full stop, right? Absence of women in public sphere and decision making institutions led to the marginalization of women not just in public sphere but also in personal sphere. But also in personal sphere. वुमेन का से नहीं था, प्रेजेंटेशन नहीं है पब्लिक में,
तो क्या पर्सनल स्फीयर में वुमेन का स्टेटस सही था? मैम नहीं था। तो मैम इसका एक सेकेंड, इसका लिंकिंग समझा गया और पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल साइंस को और स्टेट की एक्टिविटीज को रीडिफाइन किया गया। ओके, यस, या वेयर आर यू? हो गया क्वेश्चन? ओके, ये आपको समझ में आ रहा है? तो आउट ऑफ साइट गोज आउट ऑफ माइंड। तो वुमेन वेयर इन साइट इन पब्लिक स्फीयर? नो। तो व्हाट वुमेन एक्सप्लॉयटेशन वाज इन द माइंड ऑफ पॉलिसी मेकर्स? नो। ठीक है, तो व्हाट एफर्ट हैज बीन डन टू ब्रिंग द वुमेन ऑल्सो, bring visibility of women in theory, in philosophy, and therefore in public policy. So that's why you see the new concepts ke gender based budgeting, gender empowerment measures and other things, and there is a direct connection between the philosophy and the policies which come into practice. ठीक है, तो it resulted into their marginalization, fine, in both. So now contemporary view, right? Contemporary view of politics. Yes. Does the Plato's view were considered as modern, as he did not Modern. separate the personal views, personal sphere from the But state? you can't decide someone on the basis of one feature. Does he consider women at that point of time? He considered women at par with men. He does not exclude women. So वो feminist है. He can be considered as modern. Plato as woman? So Plato as modern thought process. प्लेटो एज मॉडर्न क्यों बोलना है? प्लेटो एज फेमिनिस्ट बोल सकते हैं, या यू कैन से प्लेटोस पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन। मॉडर्न भी नहीं आप बोलेंगे, कंटेम्परेरी बोलेंगे। मॉडर्न तो मार्क्स थे, मॉडर्न टाइम में भी नहीं बात की गई, तो कंटेम्परेरी बोलिए। आज का समय मॉडर्न नहीं, मॉडर्न एज इज ओवर विथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो नाउ वी लिव इन पोस्ट मॉडर्न, और बेटर है कॉल इट एज अ कंटेम्परेरी एरा। यस, anybody who supports women empowerment, is he a feminist? yes, because that is a purpose of feminism, and that's why which type of organization is UPSC? UPSC. But till now I was aware, like what I have heard is feminism is a negative thing, means like they are very extreme. No, so I say whatever you have heard, first of all unlearn everything, ठीक है, and start learning the right thing, ठीक है। So only women are not feminists, men are also feminist. Only women should not be feminist, men should also be feminist. Feminism is difficult, but simplistically speaking, talking about equality. And you know who is the best example of feminism among men? What? Raja Ram Mohan Roy? No, Gandhi. ठीक है, what made Gandhi great? What was Gandhi's method of struggle? Gandhi is a best example of the superiority of the feminist methods of struggle. फेमिनिज्म को सबसे ज्यादा एडॉप्ट किया गांधी ने। राजा राम मोहन रॉय डिड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन, बट गांधी became like women.
गांधी ने सूट वूट उतार के क्या पहनना चालू किया? धोती। धोती किससे रिलेट करते हैं आप? मेन से कि वुमेन से? साड़ी किससे रिलेट करते हैं? वुमेन से। तो साड़ी का जेंडर है, कपड़े का जेंडर है, ठीक है, कपड़े का जेंडर है कि नहीं है ना? साड़ी तो वुमेन, मतलब नॉर्मली लोग ऐसा समझते हैं, साड़ी क्या है? स्त्री धन है, स्त्रीलिंग है। हाँ मैम ओके यस। तो अभी पहले सुनो, तो गांधी कौन थे? गांधी फेमिनिस्ट हैं, या गांधी खुद फेमिनिस्ट, मतलब वो बेस्ट एग्जाम्पल है। कोई और बेटर एग्जाम्पल इंडिया में फेमिनिज्म का है नहीं अदर देन गांधी, ठीक है? तो गांधीज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल वेयर फेमिनिस्ट। तो वुमेन को आप कैसे रिलेट करते हैं? विद वायलेंस, और मेन को वायलेंस इज रिलेटेड विथ मेन। तो गांधी का स्ट्रेटजी क्या था? नॉन वायलेंस। गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड मोर बाई हिज मदर, ठीक है, और एनीथिंग दैट यू रिलेट विथ वुमेन। तो गांधी का स्ट्रेटजी कैसा था? वुमेन वाला था। ये समझ में आ रहा है? तो वुमेन स्ट्रेटजी का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? गांधीज फास्ट अनटू डेथ। ये फास्ट वास्ट कौन रखता है? वुमेन। तो गांधी क्या बात बात पे क्या कहते थे? मैं नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मेरी बात मानो, ठीक है? तो यू कैन कॉल इट वुमेन टैंट्रम्स ऑल्सो। तो गांधी फाउट दैट वुमेन मेथड्स जो हैं वो बेस्ट हैं, ठीक है? और ब्रिटिश को कैसे हराना है? इसी सब मेथड से हराना है। तो गांधी कुड वेरी स्ट्रेटेजिकली यूज। तो गांधी इज अ वेरी गुड सिंबल ऑफ फेमिनिज्म। तो आप धीरे धीरे वो समझ जाएंगे कि व्हाट इज द फेमिनिज्म हैज नथिंग टू डू विथ बॉडी, ठीक है? फेमिनिज्म इज समथिंग अबाउट द वैल्यूज which you associate with women. So you associate with men reason and with women emotions. ऐसी मेडिकल साइंस का कहना है कि मेन का राइट पार्ट ऑफ ब्रेन डेवलप होता है, उससे रीजन होता है, वुमेन का लेफ्ट डेवलप होता है, उससे इमोशन होता है। तो एक डिबेट है। इन एथिक्स यू विल स्टडी द डिबेट बिटवीन reason versus emotion, ethics of justice versus ethics of care. Ethics of justice is based on reasoning, और ethics of care जो है वो feminine idea of justice माना जाता है। जैसे नहीं, तो गांधी वॉज नॉट गॉड कि वो अपना अप्रोच कभी खत्म ही नहीं करेंगे। और दुर्गा का भी तो रूप है, हाँ? तो दुर्गा वाला भी रूप है। तो यही तो मिथ्स हैं कि वी हैव स्टीरियोटाइप्ड men women and this stereotyping has to go. Fine. So anyway, now come back to which view? मैम Contemporary view. क्या मैम what made them to exclude women? है? What made them to exclude women from the perspective of public sphere? War made exclusion of women from public sphere. No, not necessarily. Aristotle had this view. We will see what and how women were excluded. So the very reason is then war. Why war happens? War का reason भी क्या है? Masculinist qualities. तो फेमिनिज्म में ऐसे एक स्टेटमेंट है, वॉर या स्टेटमेंट है, मेन मेक वॉर बिकॉज वॉर मेक मेन, ठीक है? तो इफ यू वांट टू प्रिवेंट द वर्ल्ड फ्रॉम वॉर, you have to promote
the feminine values, which is based on idea of care rather than idea of revenge, violence and other things. So we'll come back to all these things later. अभी ये खत्म करते हैं, अभी सारा डिस्कशन नहीं कर सकते. या Ma'am, Plato talked about communism of wives. That basically it means that he treated women as goods. Then, ma'am, how No. can we say he is feminist? No, you all have lot of misconceptions. First, unlearn the things and go with how I am discussing. पहले एकदम अभी हम प्लेटो पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं. अभी के लिए जितना चाहिए पहले उतना ही डिस्कस करना है. So now let us understand the contemporary view, how politics is defined, how the scope of political science is defined in present time. Contemporary view. ठीक है? तो right, in contemporary times, there is a considerable change in the way politics is understood. Right? This change is attributed to the emergence of feminist movement. Full stop. Right? Right? Carol Harnish. Carol Harnish gave the slogan write the slogan inverted commas में personal is political. What is political? So her definition was personal is political. Which means that the boundaries between personal and public sphere are artificial. Boundaries between personal and public is artificial. Yes. Personal, is it only confined to the family sphere or does it have any other dimension? पर्सनल स्फीयर की हम लोग बात कर रहे हैं. पर्सनल मीन्स विच इज नॉट रिलेटेड टू अदर्स. जैसे मेरा पर्सनल स्फीयर हो गया, आई वॉन्ट माई पर्सनल स्पेस. ठीक है? पर्सनल स्फीयर के प्रोटेक्शन के लिए यू रिक्वायर राइट टू प्राइवेसी. तो पहले ऐसा समझा जाता था कि फैमिली, चिल्ड्रन, domestic servants, they come under personal sphere and they are concern of the head of the family. But आज definition change हो गई है. आज पर्सनल में सिर्फ आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, टॉवल यही सब बचा है. ठीक है? वरना अब बच्चों का भी मैटर क्या है? स्टेट का मैटर है. वो कौन सी पिक्चर थी रानी मुखर्जी की? देखो जाके, चैटर्जी, मिसेस बनर्जी और जो भी है ना. तो इंडिया में तो फिर भी कम है, लेकिन वेस्ट में आप कहें मेरा पर्सनल बच्चा है, मैं उसकी पिटाई करूं
तो ये आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरा पर्सनल डोमेस्टिक सर्वेंट है, इसकी मैं पिटाई करूं, आप नहीं कर सकते। या आप कहें मेरा पर्सनल हस्बैंड है, पर्सनल वाइफ है, मैं जो कुछ करूं, अब आप वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब पर्सनल कुछ नहीं रह गया, सिर्फ आपके कपड़े, आपका टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, वो भी आई डोंट नो, कुछ फैमिलीज में वो भी पर्सनल नहीं है, या आप लोग अपने रूममेट्स का चुरा के यूज करते हो, आई डोंट नो, ठीक है। तो बस अब वही पर्सनल है, अब कोई पर्सनल, लेकिन पहले पर्सनल काफी बड़ा था, ठीक है, कि ये पर्सनल है, ये एक इन लाइक every man's house used to be his castle and state will not interfere, but not now, okay. So what is the last line you wrote? So she says that these boundaries are artificial and actually there is no real boundaries, it is just an eyewash, and impact of absence of women in public sphere is impacting their status in personal sphere, ठीक है। अब लिखो राइट, hence she suggested to end this wall of separation. Was it a real wall or a mental wall? मेंटल है, हमको ऐसे बताया गया था, लेकिन रियल में सेपरेशन नहीं था, उल्टा एक्सप्लॉयटेशन था। तो शी सेड वी हैव टू एंड दिस वॉल ऑफ सेपरेशन, फाइन। सो हेंस इन प्रेजेंट टाइम्स, लिखो हेंस इन प्रेजेंट टाइम्स personal is also regarded as the part of public sphere, ठीक है। तो ऐसे अगर कंसेप्चुअली समझना है डिफरेंस इन पर्सनल एंड पब्लिक, ऐसे लिखो एक क्वेश्चन, what is the difference in personal sphere and public sphere? तो पर्सनल मीन्स pertaining to oneself, pertaining to oneself, जिसका सिर्फ आपसे संबंध हो, pertaining to oneself. बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल बैंक अकाउंट, वो भी ऐसे लगता है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी भी अब पर्सनल नहीं है, दैट्स वाई द डेटा प्राइवेसी लॉज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो नथिंग इज पर्सनल एंड पर्सनल इज बीइंग इंट्रूडेड बाय the commercial forces so much that nothing has remained personal, fine. The only thing that has remained personal or neglected by the state is the marginalization of women, transgenders, that were kept personal and state kept a blind eye towards it. On the other hand, the commercial forces have reached so much in your personal domain. So the concept of personal will also change. What is personal? God knows. Fine. So where is what camera? No one is personal now. Everything is public because of the surveillance, constant surveillance. Fine. So it will not be so easy to define personal, that pertains to just yourself, ठीक है, that is your personal. आज सिर्फ टूथब्रश के अलावा मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि मेरा पर्सनल सब गड़बड़ है ना, तो
it comes even if you don't want those messages come, fine, and when if you block, then with some other it will come, it will keep on coming. So personal, that's why state will have to go for regulation. ठीक है, तो what is personal? Pertaining to oneself. ठीक है, and what is public? देखो right, which what is public is right up, which is which pertains to society at large. Or what is collective? Right, next paragraph. However, at present time, because of growth of information and communication technology, ICT, because of growth of information and communication technology, right, everything has come out in public sphere. किसी ने कुछ पहन लिया तो ट्रोलिंग हो जाती, ठीक है, तो आपका कपड़ा, कुछ भी आपने क्या खाया, कुछ, नथिंग इज पर्सनल नाउ, ठीक है, तो पर्सनल एज वेल एज पब्लिक स्फीयर, दो feminists played a role in ending this particular boundary. ठीक है, yes. This concept of personal in respect of women or caste, led to the concept of marginalization. Yes. Can we say this, that marginalization? Marginalization का मतलब क्या हुआ कि they became powerless. तो पावरलेस कैसे बने जब पावर में थे ही नहीं? तो पावर में होने के लिए किस में होना होता है? स्टेट में. अब इन्होंने कह दिया कि स्टेट पॉलिटिक्स वुमेन का क्षेत्र ही नहीं है, तो क्या हो गया? मार्जिनलाइज हो गया. इंडिया में ये भी बोल दिया एजुकेशन, पॉलिटिक्स, वुमेन, दलित, इन लोग का क्षेत्र ही नहीं है. तो कैसे? ऑब्वियसली मार्जिनलाइज. जिसको पावर से हटा दोगे वो मार्जिनलाइज हो जाएगा. तो आप क्षेत्र निर्धारित कर दीजिए कि दिस इज वुमेन स्फीयर, ये वुमेन का स्फीयर है, ये मेन का स्फीयर है. वुमेन का डोमेस्टिक वर्क है, मेन का आउटसाइड है. लेकिन आउटसाइड तो इन्फ्लुएंस कर रहा है, सेपरेशन तो है नहीं. तो अभी ये सब नहीं माना जाता है, ठीक है. तो अब जस्ट समझना है कि हाउ वी डिफाइन पॉलिटिक्स नाउ, ठीक है. अब लिखो राइट, एज अ रिजल्ट ऑफ इमर्जेंस ऑफ feminist perspective, we take a broader view of politics or what comes under the state. Right now, even personal sphere comes within the purview of state. लिखो, for example, once now even personal sphere come within the purview of state. अब इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे मान लो हिंदू पर्सनल लॉस थे,
पहले स्टेट से गवर्न हो रहे थे या कल्चर से गवर्न हो रहे थे? कल्चर से, मनुस्मृति से गवर्न हो रहे थे, लेकिन अभी कहाँ से गवर्न हो रहे हैं? पार्लियामेंट से, तो स्टेट के अंदर में आ गए। ठीक है, तो लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पर्सनल मैटर्स लाइक मैरिज, divorce, adoption, other succession, maintenance and all, comma, also come under the scope of the state. State. ठीक है, तो नाउ द स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस यू विल गो बियॉन्ड स्टेट. फाइन, सो दिस इज हाउ यू आर डिफाइनिंग पॉलिटिकल. तो पॉलिटिकल थॉट में केवल पब्लिक स्फीयर के मैटर नहीं, पर्सनल स्फीयर के भी मैटर इंक्लूड होंगे. इफ यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज सिलेबस, they will include scholars like Mary Wollstonecraft and others. दो इन यूपीएससी में सिलेबस में अभी वो स्कॉलर्स नहीं है. ठीक है, और यूपीएससी भी एज अ इंस्टीट्यूशन कैसी है? फेमिनिस्ट है. ठीक है, हर पेपर में एक वुमेन पे क्वेश्चन रहता है कि नहीं रहता है? ठीक है, तो यूपीएससी इज ऑल्सो अ मेजर ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट. हर साल टॉपर कौन बन जाता है? वुमेन. ठीक है, तो यूपीएससी में आगे फर्स्ट 10 रैंक्स तो दे आर गोइंग टू रिजर्व फॉर वुमेन, बिकॉज यूपीएससी इज ऑल्सो एन इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल जस्टिस. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज इंडियन स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट. फाइन, सो even UPSC, all institutions of Indian state, they will have to keep welfare perspective in mind. And what leads to empowerment? Education. ठीक है, तो जब women in services, women in army, women in panchayats, women in positions of power, so this brings an attitudinal change in the society. So that is also being done with a purpose. एक पर्पस भी उसके अंदर है. क्यों? क्योंकि हमारा स्टेट कैसा है? वेलफेयर स्टेट है. ठीक है, तो जो लड़के हैं वो 10 के बाद की रैंक के ही सपने देखें. क्यों? इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, तो डिस्ट्रीब्यूशन में वो रहेगा. ठीक है, यस. मैम, जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ गया तो फेमिनिस्ट हो गया वो. हाँ? तो कुछ जैसे यूपीएससी में एक क्वेश्चन आ गया तो फेमिनिस्ट हो जाए. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब फेमिनिस्ट आता है, फेमिनिस्ट लिखना है, फेमिनिस्ट दिखना है. नहीं, तो एक लेवल होगा ना कि एक क्वेश्चन डाल के या 2 क्वेश्चन डाल के या 10 क्वेश्चन आएगा तब वो फेमिनिस्ट कहलाएगा. फेमिनिस्ट, यूपीएससी फेमिनिस्ट है अगर आप रिजल्ट्स देखें, अगर आप सिलेक्शन देखें और यूपीएससी का सिलेबस भी पढ़ें, तो सिलेबस में भी जगह जगह लिखा है वी स्पेशली इनकरेज द गर्ल्स. ठीक है, उनके गैजेट में आप देखिए तो उसमें लिखा है वी आर इनकरेजिंग द गर्ल्स. क्यों? बिकॉज दिस ब्रिंग्स एन एटीट्यूडनल चेंज. तो देयर हैव बीन स्टडीज ऑन इम्पैक्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत्स. So the studies show this brings attitudinal change, and parents are more inclined to send the girl child to the schools because they feel that because of reservation they may become in this position. तो वो क्या है? एक तरीके का attitudinal change लाने की कोशिश है. इसीलिए हर पेपर में आपको वुमेन मूवमेंट, वुमेन पर्सपेक्टिव, या अगर आप इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, यू आर गोइंग टू जॉइन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया,
तो welfare state means you will have to write from the perspective of marginalized sections. तो जो आपके conclusions होंगे या जो आपके normative judgments होंगे वो कहाँ जाने चाहिए? Towards upliftment of the vulnerable sections. ठीक है, उसी लाइट में आपको लिखना होगा अपने आंसर्स. ठीक है, चले तो पॉलिटिकल समझ में आ गया. अब कैसे, हाउ विल यू डिफाइन व्हाट इज पॉलिटिकल? सो टुडे द स्फीयर ऑफ पॉलिटिकल इज अनलिमिटेड and there is no artificial boundary. So personal is also political. अगर आपसे कहें define political, so conventionally political dealt only with public sphere, but presently personal is also considered as political. So the scope of state has become very very broad. इतना आगे आपको समझ. तो अब हमको समझना है concept thought. What is thought? Why are we using the term thought? ठीक है, तो अब लिखते हैं concept of thought. And how thought, political thought ऐसे लिखो, how political thought differs from political theory, political philosophy, political ideology, and political science. ठीक है, so we will understand thought later. First of all, let us understand what is political theory. पहले what is political theory? What is the purpose of political theory? What is theory? Theory क्या होती है? And what is its purpose? You know Newton's theory. What is the purpose? To explain something. So what is theory? Theory is a tool of explanation. So political theory will explain what? Politics. What happens in politics? Why people behave in this way? Why states go for power? अगर आपको why का आंसर चाहिए तो कहाँ मिलता है? थियरी में. ठीक है, तो like any other theory, political theory aims at explanation of politics. Physics theory, explanation of physical phenomena. ठीक है, तो how will you define political theory? तो फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज थियरी. ठीक है, तो लिखो राइट थियरी इज अ टूल, TOOL, टूल ऑफ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, फिर लिखो एवरी डिसिप्लिन हैज थियरीज. ठीक है, राइट. Even in political science we have theories which aim at explanation of political phenomena. It means without theory it is
not possible to understand anything. So apple falls on the earth, everything falls. Fall, fall, fall. लेकिन इसको पढ़ के क्या होगा? What you need to know? What is the cause? ठीक है, तो थियरी क्या करती है? एक्सप्लेनेशन. तो थियरी के बिना कोई चीज समझ में आती नहीं. तो पॉलिटिकल थियरी विल हेल्प इन एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना. ठीक है, अब लिखो टाइप्स ऑफ थियरीज. टाइप्स ऑफ थियरीज इन पॉलिटिकल साइंस. Right, there are two types of theories. First, right, philosophical theories. Or a better way is normative theories. नॉर्मेटिव थियरीज मतलब वैल्यू बेस्ड थियरीज. वैल्यू बेस्ड थियरीज. वैल्यू बेस्ड. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थियरी ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी. You understand values, you have a value, you are man of values, you have some values, you know values of a civil servant. तो values क्या होता है? values दिखते हैं, आप देख सकते हैं values, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं. ठीक है, तो value मतलब idea, justice, philosophy. Value means value judgments, right, wrong, normative ideas. Which word you are not understanding in this? You are understanding all the words? ठीक है, normative. Normative क्या होता है? Norms. Norms means what is desirable and what is not. What should be done, what should not be done. So there are certain theories which deal with these type of questions. So they are which type of theories? Normative theories. ठीक है, या philosophical theories. Okay, just write philosophical theories are also called as political philosophy. लिखो, राइट, much of the political theory is philosophical in nature. Much of the political theory is philosophical in nature. ठीक है, अब इतना सारा जो पॉलिटिकल थियरीज हैं वो सब फिलॉसफी ही है प्राइमरीली. तो यू कैन एक्चुअली यूज द टर्म पॉलिटिकल थियरी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी इंटरचेंजेबली. ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, सिंस फिलॉसफिकल थियरीज डोमिनेट the subject, we can use the term political theory and political philosophy interchangeably.
देखो, इन फैक्ट पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट is very closely related to philosophy. फिर लिखो, it originated as a branch of philosophy. Philosophy is the mother discipline out of which political philosophy developed. Now, out of political science, another discipline, public administration, developed. ठीक है, तो philosophical nature और philosophy dominate करती है. That is why studying normative political philosophy, what can be the other word? Ethics. तो एथिक्स की थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी एक ही है, सेम थ्योरीज यू विल स्टडी. और यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे तो एथिक्स का भी पेपर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एथिक्स के टीचर एथिक्स पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल फिलॉसफी का अभाव है. तो आप सिर्फ ऐसे मैकेनिकली थ्योरी को नहीं समझ सकते. तो आपने ये पढ़ा मतलब एथिक्स आपका हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है. और टीचर से अच्छा पढ़ा लोगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल जाएंगे. तो डोमिनेटिंग कौन सी थ्योरीज है? फिलोसॉफिकल थ्योरीज. अब फर्स्ट सेट ऑफ थ्योरी कौन सी होगी? फिलोसॉफिकल थ्योरी. कैन वी कॉल फिलोसॉफिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल फिलोसफी वन? यस, प्रैक्टिकली इसको एक ही कहा जाता है, ठीक है. आप सेकेंड थ्योरीज लिखे, एम्पेरिकल थ्योरीज, फैक्ट बेस्ड. एम्पेरिकल थ्योरीज, फैक्ट बेस्ड, क्वांटिटेटिव. like theories of voting behavior, theories of voting behavior, election studies. Right, next paragraph. However, such theories are few in number. ठीक है, hence लिखो, राइट, hence the dominant nature of political science as a discipline is philosophical and not scientific. ठीक है, तो नेचुरल साइंस में आप हैं कि ह्यूमैनिटीज में हैं आप? ह्यूमैनिटीज. तो हमारा सब्जेक्ट फिलोसफिकल ज्यादा है, साइंटिफिक कम है, साइंस से कम जुड़ा हुआ है. अगर हम देखें सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी इज मच साइंटिफिक, पॉलिटिक्स इज मोर फिलोसफिकल इन नेचर. ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो, लिखो, राइट, व्हेन पॉलिटिकल साइंस, क्वेश्चन लिखो, when political science is predominantly philosophical, comma, why discipline is called
पॉलिटिकल साइंस। एक और क्वेश्चन लिखे, इज इट एप्रोप्रिएट टू कॉल पॉलिटिकल साइंस साइंस? ठीक है, जब सब्जेक्ट ही फिलोसफिकल है तो साइंस शब्द क्यों यूज किया जा रहा है? और ये सारी चीजें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है, बेसिक्स हैं आपके सब्जेक्ट के, और क्या इसे साइंस कहना सही है? ठीक है, तो वी विल फर्स्ट आंसर वेदर इज इट appropriate to use the term science for political science. ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में लिखो. So I am trying to answer this question whether it is appropriate to use the term science for political science. ठीक है, तो लिखो राइट. In the words of Maitland, it's the name of one scholar, Maitland. कॉमा करके लिखो इनका स्टेटमेंट, लिखो राइट. व्हेन आई सी, SEEC, a question paper with the title Political Science, comma, I am more troubled with the title than the questions asked. तो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था, ठीक है, और ये इंसान किस चीज से परेशान है? क्वेश्चंस क्या पूछे गए वो इंपॉर्टेंट नहीं, ये टाइटल क्या है. ठीक है, तो उसने कहा आई एम मोर ट्रबल्ड, आई फियर मोर द टाइटल देन द क्वेश्चंस. क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले सब्जेक्ट का टाइटल तो सुधार लें. तो किससे ज्यादा डर लगता है, थप्पड़ से कि प्यार से? हाँ, दोनों से. तुम सही हो, ठीक है. तो ठीक है, तो वही है, क्वेश्चन से ज्यादा डर लग रहा है कि टाइटल से. ठीक है, तो दैट इज मेटलैंड्स व्यू. So should political science be called science? But if someone asks this question, remember one formula. Question का आंसर क्या होता है? Another question. ठीक है, someone ask a question from you, you should not give answer, you should give another question, let that person answer. This is politics. ठीक है, so learn politics and you should know how to do politics with your examiner, with the interview board, with your friends, with everyone, with family. Learn politics. तो पॉलिटिक्स का सीधा रूल है, सीधे से नहीं जाना है, सीधा रास्ता इज नॉट पॉलिटिक्स. ठीक है, कुछ पॉलिटिक्स करके जाना है, ठीक है, कुछ घुमाना है. तो नो सक्सेसफुल पॉलिटिशियन विल एवर आंसर एनी क्वेश्चन. ठीक है, एंड यू शुड नो द पॉलिटिक्स that you never answer a question
but still people want to listen. ठीक है, तो क्वेश्चन आवर में तो कभी पार्लियामेंट में मिलो ही नहीं. यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और असली पॉलिटिशियन कौन होता है? जो क्वेश्चन का आंसर नहीं करता, जो अपनी मन की बात करता है. तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री आइडियल है समझने के लिए. he is our philosopher king and there is lot you can learn. तो आगे से if you are a student of political science, never give the direct answer. If you will give direct answer, means you are not a scholar of political science. तो आंसर सामने वाले को ढूंढते जाना है, और तुम्हें तुम्हारा पर्पस क्या है? टू कंफ्यूज द पर्सन. ठीक है, तो हाउ डू यू विन द डिबेट? हाउ इट इज विनिंग एंड लूजिंग, gaining marks, not gaining marks. You don't get marks just because you write correctly. It is all about impression. ठीक है, तो सक्सेस इज व्हाट? परसेप्शन मैनेजमेंट. ठीक है, एग्जामिनर को आपको सिर्फ परसेप्शन देना है दैट यू नो. या आप एक बहुत बड़े फिलोसोफर और स्कॉलर हैं, आपको परसेप्शन ऐसा बनाना है. तो परसेप्शन अगर तुमने आंसर देते गए तो नहीं बनेगा. उल्टा ऐसे क्वेश्चन पूछे जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी बोलती बंद हो जाए. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज पॉलिटिक्स, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न, एंड नेवर गिव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. वी आर नॉट स्टडीइंग सोशियोलॉजी और सम अदर सब्जेक्ट. मैम, आप क्या बनने वाले हैं? पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में जाने के लिए आपको कैसा होना है? तो मैकियावेली सेड दैट अ प्रिंस शुड लर्न हाउ टू बी बैड रादर देन हाउ टू बी गुड. तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास करके आप कैसे बनेंगे? बैड. ठीक है, तो आपको कोशिश करी जाएगी कि आप अच्छे इंसान से एक पॉलिटिशियन बन जाएं और समझ जाएं. ठीक है, बिकॉज इन रियल वर्ल्ड यू कांट बी गुड. इन पॉलिटिक्स जो एथिक्स में गुड है वो पॉलिटिक्स में बैड है. मैम, यस, as you said that UPSC is more towards feminist approach. तभी तो कह रहे हैं ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. पहली 10 सीट आरक्षित हैं महिलाओं के लिए. हाँ, Ma'am, is it justiciable if the male person is much more deserving than female candidates, still female gets? yes, because you have to understand what is justice in India. तो इंडिया क्या है? स्टेट है. हर स्टेट एक अपने कंसेप्शन ऑफ जस्टिस पर बेस्ड है. तो व्हाट कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इंडिया इज? बेस्ड ऑन वेलफेयर स्टेट. तो वेलफेयर स्टेट डज जस्टिस, not the theory of justice based on welfare is not based on merit but also based on understanding the marginalized sections and their empowerment. Why this is justice? Because that is the idea behind the state in India. This may not be justice in USA but it is justice in India because our state is based on that idea of justice. Fine. So that's why Satya Prakash said all the best. So your journey to become a bad man starts from today. Okay. Thank you. Yeah.